इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको युवराज भट्टराई। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ब्रूते यत् आयुष्मान भारत योजना आरोग्य मंदिर योजना माध्यमेन समग्र राष्ट्रस्य ग्राम्यक्षेत्रेषु स्वास्थ्यसेवानां विस्तारो विधीयते। सम्भाषण मन्त्रणाभिः कूटनीत्या च पश्चिमैशिया क्षेत्रे आपीडं न्यूनीकर्तुं भारतेन समाकारितम्। अमेरिका इजराइल देशाभ्याम् ईराने आक्रमणानन्तरं 10मे दिनेऽपि पश्चिमैशिया क्षेत्रे संघर्षः तीव्रतरः। पश्चिमेशिया क्षेत्रस्य स्थितिविषये चर्चायाः याच्ञा कारणेन विपक्षस्य तुमुलकोलाहल मध्ये लोकसभा श्वः प्रातः 11:00 स्थगिता। शिलातैलेन्धनस्य मूल्यं वर्षचतुष्के ऐदं प्राथम्येन प्रति बैरलं $100 मूल्यमपि अतिक्रान्तम्। सेंसेक्स इति अंशधन विपणि सूचकाङ्कः अपि अपचितः। अपि च महिला हॉकी क्रीडा स्पर्धायां भारतम् अद्य सायंकाले हैदराबादे ऐषमः FIH हॉकी विश्वचषकीय समर्हता आपादन द्वन्द्वे स्कॉटलैंड दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रोदयत् यत् विगतेषु कतिपयेषु वर्षेषु भारतस्य स्वास्थ्य संरचना दृढा सञ्जातास्ति। वित्तसंकल्पनायाः अनन्तरम् आयोजितायां वेबिनार इत्याख्यायां सञ्जालीय संगोष्ठ्यां सबका साथ सबका विकास इति विषये सम्बोधयता श्री मोदिना प्रोदितं यत् जनानाम् आकांक्षाणां सम्पूरणं केवलं चर्चायाः विषयः नास्ति, अपितु एषः विषयः वित्तसंकल्पनायाः मूलाधारः सर्वकारस्य च प्रतिबद्धता अस्ति। साथियों, भारत आज प्रिवेंटिव और होलिस्टिक हेल्थ के लिए एक विशाल विजन पर काम कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। सैकड़ों जिलों में नए नए मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। आयुष्मान भारत योजना आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक बढ़ाई गई है। देखभाल अर्थव्यवस्थायाः विकासोदय विषये श्रीमोदी सबलमुक्तवान् यत् सन्निभालकर्तॄणां वैश्विक अभियाच्यायां वृद्धिकारणेन अपि राष्ट्रे लक्षाधिकेभ्यः युवजनेभ्यः कौशलाधारितानां जीविकानां नूतनाः अवसराः उत्पन्नाः भविष्यन्ति। हमारे योग और आयुर्वेद पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहे हैं। आप सभी इसके विभिन्न पहलुओं पर संवाद अवश्य करेंगे, लेकिन एक अहम विषय जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है केयर इकोनॉमी। आने वाले दशक में देश में सीनियर सिटीजन्स की संख्या तेजी से बढ़ेगी। इसके अलावा आज वर्तमान में दुनिया के कई देशों में केयर गिवर्स की भारी मांग है। इसलिए अब हेल्थ सेक्टर में लाखों युवाओं के लिए नई स्किल आधारित रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् विज्ञान प्रौद्योगिकी अभियान्त्रिकी गणित क्षेत्रेषु महिलानां वृद्धिः वस्तुतः गौरवास्पदं वर्तते। श्रीमोदी अतोऽपि न्यगदत् यत् भविष्यकालिक प्रौद्योगिकीषु कन्याजनेभ्यः समानावसराणां सुनिश्चयनं कर्तुं शासनं सततं प्रतिबद्धमस्ति। हमारे देश में स्टेम के विषयों पर रुचि रखने में बेटियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज जब हम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के लिए तैयार हो रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि कोई भी बेटी अवसरों के अभाव में रुक न जाए। वेबिनार में आप इस दिशा में जरूर चर्चा करें। हमें महिलाओं के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने पर और जोर देना होगा। हमें ऐसा रिसर्च इकोसिस्टम तैयार करना होगा जहां यंग रिसर्चर्स को एक्सपेरिमेंट करने और नए आइडियाज पर काम करने का पूरा अवसर मिले। प्रधानमन्त्री प्रतिपादितवान् यत् भारतं नवोन्मेष प्रधानम् अर्थव्यवसायं प्रति गच्छति। अमुना शैक्षणिक संस्थाः समाकारिताः यत् ताः निज परिसरान् केन्द्राणि च उद्योग सहयोगेन अनुसन्धानाधारित शिक्षाया केन्द्रत्वेन परिवर्तयेयुः, येन छात्राः वास्तविक विश्वस्य अनुभवं कर्तुं प्रभवेयुः।
संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि श्रुतिगम्यो भविष्यति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः सबलं प्रत्यपादयत् यत् पश्चिमेशिया क्षेत्रे आपीडं न्यूनीकर्तुं मन्त्रणा कूटनीतिश्च समवलम्बनीया। पश्चिमेशिया क्षेत्रस्य स्थितिविषये अवसदने प्रदत्ते स्वीये वक्तव्ये डॉ एस जयशंकरः प्रावोचत् यत् भारत सर्वकारेण गतमासस्य 20 दिनाङ्के तत्रत्य स्थितिविषये एकं वक्तव्यं प्रकाशितं यस्मिन् गम्भीरचिन्ता व्यक्तीकृतास्ति। साकमेव तत्र आपीड प्रसंगे सम्बद्धाः सर्वेऽपि पक्षाः संयमं सन्धारयितुम् अध्यर्थिताः सन्ति। तेनोक्तं यत् भारतस्य मतमस्ति यत् आपीडस्य न्यूनीकरणार्थं मिथो मन्त्रणायाः कूटनीतेश्च आश्रयः आश्रयणीयः। On 28th February, expressing its deep concern and urging all sides to exercise restraint, avoid escalation and prioritize the safety of civilians. We believe and we continue to believe that dialogue and diplomacy should be pursued to de-escalate tensions and address underlying issues. It is also imperative that the sovereignty and territorial integrity of all states in the region be respected. विदेशमन्त्री न्यगादीत् यत् एषः प्रवर्तमानः संघर्षः भारताय अपि विशेषचिन्तायाः विषयः अस्ति, यतोहि भारतमपि समीपस्थ क्षेत्रे स्थितमस्ति। असौ उदयरयत् यत् विदेशमन्त्रालयेन स्थितेः परीक्षणार्थं प्रश्नानाम् उत्तरार्थं च विशेषः नियन्त्रणकक्षः स्थाप्यते। तेन एतदपि प्रोक्तं यत् ह्यस्तनपर्यन्तं प्रायः 67,000मिताः भारतीय नागरिकाः देशे प्रत्यागताः सन्ति। अमुना वक्तव्यमिदं विपक्षस्य तुमुल कोलाहल मध्ये प्रदत्तम्। ध्येयमस्ति यत् इमे विपक्षजनाः एतस्मिन् प्रकरणे चर्चायाः याचनां कुर्वन्तः अवर्तन्त। डॉ जयशंकरः राज्यसभायामपि एतदेव वक्तव्यं दत्तवान्। पश्चिमेशिया क्षेत्रस्य आपीडस्थितिविषये चर्चा याचकानां विपक्ष सदस्यानां तुमुल कोलाहलस्य मध्ये लोकसभा अपराह्ने 3 यावत् स्थगितं जातं। प्रथमं स्थगनानन्तरं यदा सदनं मध्याह्ने 12 पुनः आरब्धं तदा विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः पश्चिमेशिया क्षेत्रस्य स्थितिविषये स्वतः संज्ञानं स्वीकृत्य वक्तव्यं दत्तवान्। तेन यदैव वक्तव्यम् आरब्धं तदैव कांग्रेस, डीएमके, सपा चेत्यादिभिः सहिताः अन्य विपक्षदलानां सदस्याः लिखित प्रदर्शन फलकानि गृहीत्वा मध्ये सदनं प्रविष्टवन्तः। पीठासीनाधिकारी जगदम्बिकापालः तान् निरदिशत् यत् लिखित प्रदर्शन फलकानां प्रदर्शनं सदनस्य नियमावल्याः विरुद्धमस्ति। संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजू सदनस्य मध्ये विपक्षस्य व्यवहारस्य भृत्सनाम् आलोचनां च कुर्वन् प्रावोचत् यत् अमुना नैजे जीवनकाले एतावान् दायित्वहीनः विपक्षः कदापि नैव लोकितः। अध्यक्षेण कृतेऽपि अनुरोधे विपक्षः निरन्तरं विरोध प्रदर्शनं कृतवान्, येन कारणेन सदनं श्वः 11 यावत् स्थगतीकृतम्। अमेरिका इजराइल देशाभ्याम् ईरानस्य भूम्यन्तर्वर्ती आधारिक प्रक्षेपास्त्र संरचना क्षेत्रे आक्रमणानन्तरं पश्चिमेशिया क्षेत्रे संघर्षः तीव्रतरः जातः। ईरानेन अपि खातीदेशेषु प्रक्षेप्यास्त्रै ड्रोनास्त्रै च कृतानि आक्रमणानि। शीलातैलेन्धनस्य मूल्यं वर्षचतुष्के ऐदं प्राथम्येन प्रतिबेरलं $100 मूल्यमपि अतिक्रान्तम्। सेंसेक्स इति अंशधन विपणि सूचकाङ्कः अपि 700-1,000मिताद् अङ्कादप्यधिकतया अपचितः जातः। निफ्टी समवायः अपि प्रारम्भिके व्यापारे 500मिताद् अङ्काद् अपि नीचैः पतितः। ईरान युद्धेन मध्यपूर्वदेशे उत्पादनं नौवहनं च बाधितं जाजायते, येन तैलमूल्यानि वर्धमानानि सन्ति। अपि च हॉकी क्रीडायां भारतीय महिलादलम् अद्य सायंकाले हैदराबादे ऐषमः FIH हॉकी विश्वचषकीय समर्हणीयता आपादन चक्रस्य पूल बी मध्ये स्वस्य द्वितीय स्पर्धायां स्कॉटलैंड दलं सम्मुखीकरिष्यति। स्पर्धेयं सायं 7:30 आरप्स्यते। ध्यातव्यमस्ति यत् ह्यस्तने भारतीय दलेन उरुग्वे दलं 0-4 अङ्कैः पराभूतम्। अद्यापि भारतीय दलं विजयस्य आकाङ्क्षया अग्रे प्राङ्गणे अवतरिष्यति। इति वार्ताः।